Yeah, hi everyone. So this is a practical session of like DL creation, Microsoft Group creation. Yeah. So इस सेशन में हम लोग क्लियर करेंगे कि हम कैसे Microsoft 365 एडमिन सेंटर में ग्रुप क्रिएट करेंगे, लाइक मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रुप. So how to create multiple type of group in Microsoft 365 admin center. So this is my today agenda. So first need to enter the credentials after click on a admin option. Then everyone go to the team and group option. Under the teams and group, click on a active team and group. So everyone, under the Microsoft 365 admin center, two options is available. Like group creation, two options is available. First, you can create a group through the Microsoft 365 admin center. Second option, you can create a group through the Exchange admin center. Right? Both options is available. So according to requirement base, according to like your suitability, you can create a group. So first हम लोग डिस्कस करते हैं through the Microsoft 365 admin center. So everyone, first need to open a Microsoft 365 admin center. After that you can see team and Microsoft 365 group option is available. Second option is distribution list. थर्ड इज सिक्योरिटी ग्रुप. सो अभी हम इस क्लास में मीन्स लाइक दैट इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप क्रिएशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट क्रिएशन. सो हम एक टीम कैसे क्रिएट करते हैं. सो फर्स्ट वी विल टॉकिंग अबाउट हाउ टू क्रिएट अ टीम. So if need to create a team, so click on a first click on a Teams and Microsoft 365 group option. Then go to the add a team option because अभी हम एक team create करने जा रहे हैं, right? So a team provide a place to chat and collaborate the file Microsoft team. मीन्स इसके थ्रू हम माइक्रोसॉफ्ट टीम का ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं विद लाइक इन द थ्रू द लाइक Microsoft 365 admin center, because under this admin center team option is available. Like you can see आपको टीम ऑप्शंस भी दिखेगा लाइक दैट. आप इसके थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लाइक एक्टिव टीम एंड ग्रुप के थ्रू भी क्रिएट कर सकते हैं. सो टू ऑप्शंस इज अवेलेबल, राइट. सो हमने क्या किया, फर्स्ट क्लिक ऑन एक्टिव टीम एंड ग्रुप, सेकेंड क्लिक ऑन टीम्स एंड Microsoft 365 group. After click on add a team. Under this option create a team, right. So what is a team? So team provide a place to chat and collaborate of like files in Microsoft team. It's include an email address for the connecting everyone on the team, like SharePoint site, publishing information. To get the start, fill out the some basic information about these new teams, right. So we first need to enter the team name. हम अपने टीम का नेम क्या डिसाइड कर रहे हैं, राइट. क्रिएट अ टीम लाइक दैट सर्विस डेस्क. सो मेरे टीम का नेम क्या है, सर्विस डेस्क. After if need to enter the description, so definitely you can enter it, otherwise no need to required. because everyone जिसमें ये रेट स्टार लगा है वो 100% रिक्वायर्ड है, उसको आपको फिल करना पड़ेगा, राइट. सो विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन क्लिक ऑन नेक्स्ट. आफ्टर दैट
नीड टू ऐड द ऑनर मीन्स सर्विस डेस्क का ऑनर आप किसे असाइन कर रहे हैं, किस पर्सन को. मीन्स द टीम ऑनर्स कैन ऐड एंड डिलीट द मेंबर्स. इट एडिट द टीम डिटेल एंड डिलीट द कन्वर्सेशन. मीन्स जिस भी पर्सन को हम इस टीम का सर्विस डेस्क टीम का ऑनर असाइन करेंगे, वो किसी भी पर्सन को ऐड कर सकता है, किसी भी पर्सन को डिलीट कर सकता है, किसी भी पर्सन के डिटेल को एडिट कर सकता है एंड किसी भी पर्सन के कन्वर्सेशन को भी डिलीट कर सकता है. राइट, आई होप सबने ये अंडरस्टैंड कर लिया होगा. आफ्टर दैट, सो फर्स्ट नीड टू असाइन द ऑनर. सो जस्ट लाइक एवरीवन, मैंने आशुतोष को इसका ऑनर असाइन किया. सो आशुतोष रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आशुतोष के जितने भी मेंबर्स होंगे वो इसे कंट्रोल कर सकते हैं. मीन्स दिस इज अ ऑनर. इफ नीड टू असाइन द सेकेंड ऑनर, आप किसी और भी पर्सन को इसका ऑनर क्रिएट करना चाह रहे हैं, लाइक कॉन्टैक्ट. सो कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी यूजर कॉन्टैक्ट मेल आईडी का यूज करेगा, वो एवरी मेंबर्स को ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं एंड उनके कन्वर्सेशंस को भी डिलीट कर सकते हैं. आफ्टर असाइनिंग ऑनर, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट. आफ्टर दैट, ऐड द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप. मीन्स सर्विस डेस्क टीम के मेंबर्स आप किसे असाइन करना चाहते हैं. सो यू नो दैट members have to access to everything in the teams, including chat, including channels means every person are create channels and files. Team members can invite the guest to join our meetings, right? And you can edit, you can, but everyone, but they cannot edit एनी टीम्स डिटेल. राइट, किसी भी पर्सन का सेकेंड पर्सन ये चाह रहा है कि उसकी डिटेलिंग को ऐड कर ले. सो इट्स नॉट पॉसिबल. फर्स्ट नीड टू परमिशन एंड एक्सेस. राइट, सो आगे आने वाले टाइम में आउटलुक सेशन में वी विल डिस्कस अबाउट अंडर द टीम्स, प्रैक्टिकल सेशन में हम आप लोगों के साथ की भी डिस्कस करेंगे. राइट, सो इन assign a member. So Pawan is a member of this group. This is a second member, third member. So search out. Okay, so three person is a group member, right? So select. After that, click on the next. Then everyone need to create a team mail ID. Means email all team members using this mail address and choose the privacy settings, control who can join the team and see its contact in the team search result. So everyone, you can create a one team mail ID. So आपने टीम टीम का नेमिंग क्या सेलेक्ट किया है. नेमिंग इज सर्विस डेस्क. सो इस नेम से ही हम क्रिएट करते हैं ना, ESD, सर्विस डेस्क. सो माई मेल आई डी इज servicedesk@asu-cloud.site, servicedesk@tcs.com, servicedesk@evision.com, servicedesk@hcl.com. Right, so this is a good team mail ID. Right, after that, same time you can assign a privacy. क्या इसे आप पब्लिकली रखना चाह रहे हैं, अदर आप इसे प्राइवेट रखना चाह रहे हो. पब्लिकली मीन्स पीपल कैन ज्वाइन विदाउट एनी अप्रूवल्स फ्रॉम द ऑनर. कोई भी पीपल कभी भी इस टीम में ज्वाइन कर सकता है विदाउट एनी परमिशन, किसके, ऑनर के. बट if you can enable the private, so people can only join join if they have added by the owners.
ये ऑनर्स ऐड करता है सो दैट पीपल कैन ऐड ऑन दिस मीटिंग्स, अदरवाइज वो पीपल्स ऐड नहीं हो सकते। अंडरस्टैंड? सो according to requirement base, according to requirement base, company are using this credential, right? like public and private method, दोनों की वो यूजेस तो करते हैं बट रिक्वायरमेंट के बेस पे, राइट? if selected on a public, so public means people can join without approvals from honor, right? But if I am talking about private, so people cannot people can only join if they have added by the honor permission, right? so अभी हम इसे पब्लिक ही रखते हैं, देन क्लिक करना नेक्स्ट। सो एवरीवन, आप लोग ये सारा डिटेल्स चेक कर सकते हैं, राइट? डिस्क्रिप्शन नॉट प्रोवाइडेड, हमने अभी डिस्क्रिप्शन कुछ प्रोवाइड भी नहीं किया था। आई एम मेंबर ऑफ 3 मेंबर्स एंड दिस इज़ अ मेल आईडी एंड ये आपकी डिटेलिंग है। देन ऐड मेंबर्स, अगेन क्लिक, देन वेट 1 and 2 seconds, आपको वेट भी करना पड़ेगा बिकॉज ये बैक एंड प्रोसेस स्टार्ट हो गया, मीन्स कॉन्फ़िगरेशन, राइट? so you can see successfully created on Teams. So now that team has been created, you can change more of the settings like send copy of the team conversation, lets people outside of the organization, and then mail these teams, right? Don't show the team email address in the Outlook, so let members it editing and deleting the send message in Teams. So multiples options is available, right? after that close this. so आप लोग देख पा रहे हैं 1 टीम मेल आईडी इज क्रिएटेड, राइट? एंड आप लोग देख सकते हैं स्टेटस, अंडर द स्टेटस टीम ऑप्शन इज विजिबल, राइट? सो हम लोगों ने एक पब्लिक क्रिएट किया है एंड सेकंड इज प्राइवेट। सो 2 मेल्स को हमने क्रिएट कर रखा है, टीम मेल, राइट? सो आई होप सब लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा हाउ टू क्रिएट अ टीम्स ग्रुप। सो दैट सेकेंड वी डिस्कस अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट। हम कैसे एक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट को क्रिएट करेंगे, मीन्स डीएल। सो एवरीवन go to the distribution list option. Under this one option is available, add distribution list. so अभी हम create क्या करने जा रहे हैं, DL means dynamic distribution list. so click on add dynamic distribution list. so if I am talking about a DL, so use the distribution list to send mail to group of peoples, right? to get the start, fill out those some basic information about the group, right? so first fill the information, means group name, means DL name, like that my DL name is HR group. हमने DL name क्या रखा, HR group. after that need to mention the description about DL. हम क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं ये DL, purpose of the DL creation, right? after click on next. as it is same, first need to assign the honor of this DL. हम इस DL का ऑनरशिप किसे प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, right? means group owner has to unique person to manage this group. they can add and remove the members, they can change the group of the setting, they can renaming of the group name, they can updating the description and more things, right? if I am assigning a that honor, so honor can manage these all credentials, right? honor person को ऐड भी कर सकता है,
ऑनर परमिशन को रिमूव भी कर सकता है, ऑनर लाइक ग्रुप के सेटिंग को भी चेंज कर सकता है, ऑनर लाइक ग्रुप के नेम को भी चेंज कर सकता है, राइट। सो इस पूरे ग्रुप को मैनेज कौन करेगा, राइट। सो फर्स्ट नीड टू assign the honor of this group. So click on assign honor option, just assign the one honor. So अभी हमने like honor assign किया आशुतोष, click on add. आशुतोष is the honor of this group, means HR group का honor कौन है, आशुतोष। आशुतोष can manage these all like permission and access, right। यूज़र को ऐड करना, रिमूव करना, लाइक रीनेमिंग करना, डिस्क्रिप्शन चेंज करना, अपडेट्स करना, दीज आल, राइट, है ना। सो कंपनीज में आप लोग लाइक आपके थॉट आते होंगे माइंड्स में कि डिफरेंट सिनारियोज को डिफरेंट लोग मैनेज कैसे कर रहे हैं। सो एज इट इज सेम सबको उनका एक ऑनरशिप प्रोवाइड किया जाता है। कोई किसी ग्रुप का मेंबर्स का ऑनरशिप हैंडल कर रहा है, सर्विस डेस्क के ऑनरशिप को हैंडल कर रहा है, लाइक टीम लीड्स और के जो भी हैं सर्विस डेस्क के टीम लीड, है ना। एचआर ग्रुप के ऑनरशिप को लाइक एचआर हेड हैंडल कर रही है, वो अपने ग्रुप को मैनेज करना, डिलीट करना, है ना। सो एज इट इज सेम। एंड कंपनीज में एवरी कंपनी आर प्रोवाइडर लाइक ट्रेनिंग्स अबाउट एवरी यूजर्स। जितने भी आपके कंपनीज में यूजर्स होते हैं, एवरी टाइमली बेसिस कंपनी आर प्रोवाइड द ट्रेनिंग, राइट। जो भी न्यू फीचर्स एड ऑन करते हैं, जो भी न्यू इम्प्लीमेंटेशन होता है उसके रिलेटेड, राइट। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। आफ्टर दैट नीड टू ऐड द मेंबर। अब इस ग्रुप में लाइक एचआर ग्रुप के मेंबर्स कौन कौन है, सो ऐड द लाइक मेंबर्स। सो ग्रुप मेंबर्स विल रिसीव द मेल मैसेज सेंड एंड ग्रुप मेल एड्रेस by default, inviting the inviting the like meetings, join the groups, right, as it is same, these are options. So first need to add the members, so click on add member option and select the members, right। just like मैंने select किया, so member is like contact, like member is Pavan, member is Pawan Rai, member is Puran, member is Rahul। सो 6 इज अ मेंबर्स, ये सारे इस ग्रुप के मेंबर्स हैं। आफ्टर दैट क्लिक ऑन नेक्स्ट। देन एवरीवन नीड टू क्रिएट अ डिस्ट्रीब्यूशन मेल आईडी, राइट। यूजर्स किस मेल आईडी पे मेल सेंड करके इन यूजर से कम्युनिकेट करेगा। सो नीड टू क्रिएट द मेल आईडी, लाइक मेल आईडी इज एचआर ग्रुप। So HR group at the tcs.com, HR group at the evision.com, HR group at the like HCL.com, so that these all mail is a like DL mail, right, according to creation. Then if I am enabling the communication, so after allowing the people outside my organization to send this DL group, यदि मैं इसे अलाउ करता हूँ, so any outside people can try to sending mail on this DL mail ID, so it's possible, otherwise like mail is not receiving, right। so अभी मैं इसे allow नहीं करता हूँ। without allowing click on a next and then click on a review and finish। review means again like scroll down, verify these all the details and click on a create group। after click on a create group, you can see like group is created successfully। हमने एक HR group create कर लिया, right। so close the pub। so as it is same, according to requirement base you can create a multiple group in tenant, right। so I hope each and every users, each and every participant understand both concept like team creation and DL creation। so meet you next video, and under the like next video we will discuss about DDL, means dynamic distribution group। why dynamic distribution group is required, क्यों उसकी requirement है, so we'll discuss about second video। okay।